सिलीगुड़ी में प्रतिबंधित कप सिरप के साथ एक युवक गिरफ्तार। Pamper, not just a hospital, but a mother. भक्तिनगर थाने की पुलिस ने बीती रात एक बार फिर से यात्री बनकर मादक पदार्थ की तस्करी करने पहुंचे एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम उत्पाल सरकार है। वह रायगंज का निवासी है। मिली जानकारी के अनुसार रायगंज के रहने वाले उत्पल बस से सिलीगुड़ी पीसी मित्तल बस स्टैंड प्रतिबंधित कप सिरप की डिलीवरी करने पहुंचा था, जिसके गुप्त सूचना भक्तिनगर थाने की पुलिस को मिल गई। सूचना के आधार पर पुलिस ने अभियान चलाकर उत्पल को पकड़ लिया। इस दौरान जब उसकी सब्जी की बैग की तलाशी ली गई तो भारी संख्या में प्रतिबंधित कप सिरप की बोतल बरामद हुई। बरामद प्रतिबंधित कप सिरप का अनुमानित बाजार मूल्य लाखों रुपया आंकी गई है। भक्तिनगर थाना की पुलिस ने आज आरोपी को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश की है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।